Hi, good evening, everyone. I once again welcome you all to Prepcademy live listening sessions. So today we are going to conduct a listening live session, and side by side, I'll be telling you that what are the techniques to do a particular type of question. And today we will go question wise, because we usually do the whole mock test, but then you don't come to know that where are you lacking and in which part you have the problem and in which part you need to improve more. So today we'll do question wise question, and then you can tell me your problems and I'll let you know that which approach you can use to improve yourself in that particular area. So I welcome you all, Jashan, Tarun, Manpreet. Hi, everybody. How are you? Hello, ma'am. I am fine. How about you? I'm also good. So how are your preparations going on for the festivals? Good, ma'am. So tomorrow we will not be having any session because I think most of you will be busy with the kite flying and the bonfire, and because Lodi is a very big festival in Punjab and I think everybody celebrates, and I think everybody is packed in their homes and they can have some fun. Okay, so shall we begin with the listening test? Anybody before that, I would like to ask you if you have any doubt in any question type. If you feel that you're not able to solve or crack any question type and you lack in that question, so I would like to first of all solve your doubt so that you can apply that approach in the upcoming test. जशन, आप मुझे बताओ किसी में प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चन में? मैम मुझे एमसीक्यू और जो 3 वर्ड में ब्लैंक्स होती है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। एमसीक्यूज में ऑलमोस्ट सबको प्रॉब्लम होती है, पर एमसीक्यूज करने का एक ही तरीका है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं एक क्वेश्चन, जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, उसमें ये होता है कि अब सपोज करो उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और 3 ऑप्शन दे दिए, और वो तीनों ऑप्शंस की बात करेंगे ऑडियो में आपको कंफ्यूज करने के लिए। और कई स्टूडेंट्स कैसा करते हैं कि मुझे पहले एक ऑप्शन सुन गया तो मैंने वो करेक्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। वो आपको वो तीनों ऑप्शंस की बात करेंगे, पर आपको जज करना है कि ऑप्शन वो जो भी वो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन के साथ कितना रिलेट कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। प्लीज फोकस ऑन दिस। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। रीड इज अनदर थिंग बट अंडरस्टैंडिंग इज अनदर थिंग। और जो अगर आप अंडरस्टैंड करोगे क्वेश्चन को, तो nobody can stop you from getting good banks, और कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने से। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को समझोगे, अगर आप ऑप्शंस को समझोगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू गुड स्कोर गुड बैंड्स। और क्वेश्चन, और जो आपका ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को क्वेश्चन से रिलेट करना है ऑडियो सुनने के बाद। सो इफ यू आर रिलेटिंग द ऑप्शन टू द क्वेश्चन कि हाँ ये इसका आंसर है कि नहीं ऑडियो सुनने के साथ साथ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो प्लीज डोंट गो फॉर कीवर्ड्स कि अगर सपोज करो क्वेश्चन में एक्सेसिबल था और ऑडियो में एक्सेसिबल था और ऑप्शन में एक्सेसिबल है तो आपने वो टिक कर दिया। वो तीनों ही ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको वो कैसे क्रैक करना है, आपको उस कंफ्यूजन से कैसे बाहर आना है क्वेश्चन से रिलेट करके। तो ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्निक। और बताओ मुझे मनप्रीत, तरुण, कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है? मैच द इंफॉर्मेशन। मैच द इंफॉर्मेशन थोड़ा सा टफ तो है, पर उसमें आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। जब वो आपको टाइम देते हैं ना टू रीड द ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो जब वो ऑडियो चल रही है तो ऑब्वियसली सीक्वेंस में ही बात करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? कि क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सीक्वेंस में ही चलने हैं ऑडियो में। फायदा क्या पढ़ने का है? ऑप्शंस। ऑप्शंस को दिमाग में बिठा लो कि हाँ ये है। जब भी वो इस ऑप्शन की बात करेंगे तो मैं उस पर फोकस करके आई ट्राई टू फाइंड आउट। ओके मैम। एंड ऑल्सो ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड टू वर्ड मतलब समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्वर्जेशन एज अ होल, कि वो क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि वो एग्जैक्टली आपको वही लाइन बोल देंगे जो उन्होंने लिखी हुई है।
ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि दे आर स्पीकिंग द सेम एग्जैक्ट लाइन व्हाट दे हैव रिटन। वो कुछ ट्विस्ट करके, सिनोनिम्स यूज करके ऐसे आपको बोलेंगे। तो वो आप कैसे क्रैक कर पाओगे अगर आप उसको बात को समझोगे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द वर्ड्स। इसका समझ में नहीं आया, मतलब एक वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग एज अ होल, कि उसका कंक्लूजन क्या है बात का, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस, वो कन्वे क्या कर रहे हैं। सो अपना थोड़ा जो अप्रोच है दैट शुड बी ब्रॉड, ये ओवरऑल क्या बात कर रहे हैं, फिर आप उसको लाइन के साथ मैच कर पाओगे कि हाँ इसमें भी यही बात कर रहे हैं, इस बात का भी यही मतलब है, और जो ऑडियो में बात है उसका भी यही मतलब है, और फिर यू कैन मैच। क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स या एग्जैक्ट लैंग्वेज या एग्जैक्ट ही अगर आप लाइन ढूंढने लग जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। और मुझे बताओ कोई प्रिया, मनप्रीत, लिसनिंग में क्या प्रॉब्लम है आपको? Spelling mistake. स्पेलिंग मिस्टेक तो दिस इम्प्रूव्स विद टाइम, क्योंकि अब इतने सारे स्पेलिंग्स हैं। वो तो जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, या जब हम प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग की, तो वो साइड जब इवैल्यूएशन होती है उसकी, लाइक इफ somebody इज देयर टू इवैल्यूएट योर वर्क, तो दैट पर्सन कैन टेल यू कि आप यहाँ यहाँ गलतियां कर रहे हो। तो आपका एग्जाम कब है? 29 January. तो आप अपना काम इवैल्यूएट करवा रहे हो, बिकॉज इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, मैम, अटेंड कर रहा हूँ ऑनलाइन ठीक क्लासेस. है, तो अगर आप अपना काम इवैल्यूएट करवा रहे हो तो उनको बोलो कि फोकस ऑन दिस, मुझे आप एक एक स्पेलिंग बताओ कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर वर्क इवैल्यूएटेड। ओके, प्रिया, मनप्रीत, आप मुझे बताओ। मैम लॉन्ग एमसीक्यू है जो। लॉन्ग एमसीक्यूज, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, सबकी एक ही अप्रोच है। सारे ऑप्शंस को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और ऑप्शंस कई बार ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते ऑडियो से, पर ऑडियो में बात जरूर की होती है उसकी। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या सोल्यूशन है? अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। जस्ट डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द वर्ड कि इसने ये वर्ड तो यूज किया नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आपको उनकी बात समझनी है, क्या पता उन्होंने वो बात घुमा फिरा के ऑप्शंस में वही बोल रही हो पर वर्ड्स डिफरेंट यूज किए हो। दिस इज ऑल अबाउट आयल्स। ये आयल्स यही है, बात को समझना। तो आयल्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक गोल्डन रूल है, अंडरस्टैंड। समझो वो क्या कह रहे हैं। और समझने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एक एक वर्ड का आपको मतलब समझ आना चाहिए, वो किसी को नहीं आ सकता। इवन आई डोंट नो मीनिंग ऑफ मेनी वर्ड्स। जब मैं कोई भी लिसनिंग करती हूँ या कुछ, मुझे भी नहीं पता होते। बट आई ट्राई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइन एज अ होल, कि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर मैं मैच करती हूँ एमसीक्यू से कि हाँ ये भी यही बोलना चाह रहे हैं। मैम और जो मैप है वो उसमें तो मेरे 7 में से 6 गलती होनी है, वो कभी भी नहीं सही होते मतलब। तो मैप में जब वो आपको, उनको आपको बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो आपकी ऑडियो चल रही है ना, यू जस्ट हैव टू फॉलो द ऑडियो ब्लाइंडली। अपने पेंसिल लो और मार्क करते जाओ। मतलब वॉट एवर दे आर सेइंग, अगर वो बोल रहे हैं कि स्कूल से लेफ्ट लो, तो अपने पेंसिल लेके गो टू लेफ्ट। मतलब ब्लाइंडली फॉलो द ऑडियो, कहीं नहीं अपना ध्यान भटकाना। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैप करने का तो यही एक फॉर्मूला है, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द ऑडियो। वो कुछ भी बोल रहे हैं, आई थिंक हमने लास्ट लिस्टिंग में मैप किया था, तो शायद अगर इसमें होगा तो विल डिस्कस साइड बाय साइड कि कैसे करना है। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लिस्टिंग में मैं मैप इंक्लूड करवा दूंगी। पर वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैप करने का एक ही फॉर्मूला है, जस्ट लिसन टू द ऑडियो ब्लाइंडली। कुछ नहीं और सुनना, कुछ नहीं और देखना, कहीं नहीं और दिमाग होना चाहिए। बस जो वो बोल रहे हैं पेंसिल लेके कीप ऑन मार्किंग। फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट तो मेरा ऑलमोस्ट सही होता है, उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम है। बस सेकंड थर्ड में जैसे डिस्क्रिप्शंस नहीं आ जाती, और उसमें थोड़ी बहुत मतलब सेकंड थर्ड में प्रॉब्लम है। फर्स्ट फोर्थ तो ठीक है। ठीक है प्रिया, अभी हम करेंगे ना क्वेश्चंस, तो एक पार्ट के बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी, आप आंसर चेक करना और मुझे डाउट्स बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने आपका ये क्यों गलत किया है, कैसे ठीक कर सकते हो आप। अभी ओके। प्रैक्टिस स्टार्ट करें फिर हम। और मैम मैंने पूछना था, जैसे हमने घर में प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की, तो कौन से फॉलो करे पेज वगैरह, आप बता दो एक बार। रिपीट करोगे? अब आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी।
जैसे कोई भी प्रैक्टिस करनी है ना, जैसे मैप की आ रही है या डिस्क्रिप्शन या होल प्रैक्टिस की, कौन से मतलब साइट से करें? तो आप या तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो किसी भी, जैसे जो प्रैक्टिस जो बुक्स होती हैं वो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो बुक्स, उसमें सारे पेपर्स होते हैं। या फिर आप कैम्ब्रिज की बुक्स ऑनलाइन बाय कर सकते हो, या तो आप पैकेजेस बाय कर सकते हो ऑनलाइन जो होते हैं। और अगर आपको वैसे आपका आप एग्जाम कब है आपका? मैम एक्चुअली मैंने एक बार तो एग्जाम दे दिया हुआ, मेरे 6.5 है, बट मेरी थोड़ी गैप के कारण अप्रोच 7 की है, इसलिए मैं घर में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे मेरे 6.5 है। ठीक और है, तो अभी आपने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया हुआ? ये मैम मतलब मुझे पता ही है सब, मेरा सीख के बस 15-20 दिन ही लगाऊंगी, बाकी घर में ही जैसे। अच्छा, ठीक है। वैसे तो वैसे अभी तो आपने पेपर बेस देना है या कंप्यूटर बेस देना है एग्जाम? नहीं मैम, पेपर बेस्ड। पेपर बेस देना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन पैकेजेस बाय कर लो, क्योंकि बुक्स जो होंगी वो बहुत एक तो कॉस्टली हैं, जो मतलब जो हार्ड कॉपी की बुक्स हैं, तो दे आर यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉस्टली। और उसके बाद वो मतलब किसी काम की नहीं है उसको, अभी आपने प्रैक्टिस कर देन व्हाट विल यू डू? और अगर किसी को रेफर भी करोगे तो सबको लेटेस्ट ही चाहिए अब। यस तो मैम। आप ऑनलाइन पैकेजेस ले लो और उसमें आपको कुछ पेपर्स मिलते हैं, जैसे 15 का पैक मिल गया या 10 का पैक मिल गया, और उसकी आप प्रिंट आउट निकाल के पेन एंड पेपर से प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। साइट कौन सी लूं? जैसे होता है ना कि इसकी, वो पूछ रही हूँ मैं जैसे। आप कैम्ब्रिज की ले लो, कैम्ब्रिज की ले लो, ब्रिटिश काउंसिल की ले लो, आईडीबी की ले लो। हर किसी के पास पैकेजेस हैं, मतलब आप आईडीबी की लो या कैम्ब्रिज की लो, दैट इज बेस्ट, क्योंकि उनके ही पेपर्स होते हैं। तो वो सैंपल पेपर्स, अगर वो भी नहीं करना तो जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना, जैसे अभी मतलब हर मंथ जैसे पेपर होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो, आपको पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि आजकल क्या पैटर्न चल रहा है। ओके ओके। और वो पेपर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको आईडीपी की साइट पे या ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो शेल वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिस? और उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द यूट्यूब चैनल. If you miss on any video, and suppose if you have joined in between due to any reason, so you can subscribe to YouTube channel और वहां पे आपको notifications मिल जाएंगी about the video, and then you can see all the videos because all the videos are uploaded on YouTube और आप कभी भी देख सकते हो. So I'll just drop the link first, and in the meantime I would request every one of you to please get your pen and paper, और हम listening की practice start करने वाले हैं. And the students who are live with us also, please get your pen and paper. So this is the link for the YouTube channel. आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. So I'll share my screen in a moment. Show me a thumbs up when everybody is ready. जब सब रेडी हैं मुझे एक बार बता देना, तो I'll play the audio. Yes, Tarun, Manpreet, Priya, let me know when you're ready. Manpreet, Priya, are you ready? Shall we begin? Okay, so I suppose everybody is ready. So I'll play the audio and let me know if you're not able to hear the sound.
मैम आपने ऑडियो प्ले कर दी हुई है? Are you not able to listen to the audio? आपको ऑडियो अभी सुन नहीं रही थी? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। ऑडियो चलते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। You should have told me before. 2 मिनट हो गए ऑडियो चलते को। मुझे लगा शायद आप वेट कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स का। नहीं नहीं, ऑडियो चलते को दो। ओके चलो, अच्छा है, नहीं चली, 2 स्टूडेंट्स और आ गए तो उनका मिस नहीं हुआ। ओके, जस्ट करंट सेशन हम लिसनिंग कर रहे हैं, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा से। पहले ऑडियो की आवाज चल नहीं रही थी, अब मुझे आप बताना प्लीज, अगर नहीं चले। मैं शेयर साउंड कर देती हूँ। Back of the library. Right. Section 1. You will hear a customer phoning a builder to discuss Are you some able to work she hear would now? like him to do on her home. Yes, ma'am. First, Okay. you have some time to look at questions 1 to 6. Please mute yourself everyone. मैम उन्होंने 1 to 6 बोले और यहाँ पे क्वेश्चन 7 to 10 है। नो प्रॉब्लम। वो एक मिनट, आई विल जस्ट सी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगी। तो what we can do is we can skip a little part of it. You will see that there is an example that has been done for you. Flat, and I wonder whether you'd be able to do the work. I'm sure I'd be able to help, but let me take down a few details. Yes, of course. Well, firstly, how did you hear about us? It was my friend May. इसके बाद 5 से शुरू होगा। मैम ऑडियो प्ले है? नहीं, और वो भी शायद उन्होंने पॉज किया है। I think there's some problem happening with the audio. Just let me check. Give me a moment. Section 1. You will hear a customer phoning a builder to discuss some work she would like him to do on her home. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Thorndike? Good morning. Is that Mr. Thorndyke? Speaking. How can I help? I've got quite a few things which need painting and fixing in the flat, and I wonder whether you'd be able to do the work. I'm sure I'd be able to help, but let me take down a few details. Yes, of course. Well, firstly, how did you hear about us? It was my friend May Hampton. The customer heard of the builder from her friend, so friend has been written in the space.
Now we shall मैम इसको begin. थोड़ा सा आगे कर You should दीजिए। answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Thorndike's? Good morning. Is that Mr. Thorndyke? Speaking. How can I help? I've got quite a few things which need painting and fixing in the flat, and I wonder whether you'd be able to do the work. I'm sure I'd be able to help, but let me take down a few details. Yes, of course. Well, firstly, how did you hear about us? It was my friend May Hampton. You did some excellent work for her a couple of years ago. Do you remember? Oh, yes, that was in West Park Flats. Lovely lady. Yes, she is. And what's your name, please? It's Edith Pargeter. Edith. Can you spell your surname, please? It's Pargeter. Double T, right. And do you live in West Park Flats as well? No, actually, it's East Park, flat 4. Oh, right. That's over the road, I seem to remember. Quite difficult to get to. Yes, it's at the back of the library. Right, I know. And what's your phone number? 875-934. But I'm out a great deal in the afternoons and evenings. So, would the best time to ring you be in the morning? Yes. Fine, I've made a note of that. Can I just ask, I'll be in a van, and I know parking's rather difficult around your flats. Where would you recommend? Well, I always tell people in larger vehicles to park by the post box on the other side of the road from the entrance. Good, thanks. And will you be able to give me a full itemised quote? Oh, yes, I'll list all the jobs separately with individual prices. That'd be a great help. No problem. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Now, what would you like me to do? Firstly, and most urgently, is in the kitchen. With all the weather damage, the glass in the door has cracked and I'd need that fixing. I presume you mean replacing? Oh, yes, and as soon as possible. What I'll do is come round tomorrow morning and do that immediately. Oh, thank you so much. The other things aren't so urgent, but... Now, I'll make a note of everything you want doing. Well, in the kitchen, I'd like some painting doing. All the kitchen walls? Just the area over the cooker. It's very greasy. Right, it does tend to get that way. Yes. Well, if you want a proper job done, what I'd need to do is strip the old paint and plaster it about a week before I paint it. Of course. Now, May tells me you also do work in the garden. That's right. Well, I'd like you to replace a fence. Just one? Yes, at the far end. Fine, shouldn't be a problem. And that's the lot. Fine. Yeah, as I say, I can come round tomorrow morning to look over things with you. Well, that's great, thank you. So, I look forward to seeing you tomorrow at... That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Please check your answers, everyone, and let me know if you are not able to solve any question. मैम 10th गलत हुआ मेरा। Okay, और कोई किसी का गलत हुआ हो? मैम मेरा 9th तो skip हो गया था। अच्छा, और कोई? ठीक है, एक बार 9, 10 Now turn to section दोनों 2. देख लेते हैं।
So would the best time to ring you be in the morning? Yeah. Tomorrow morning and do that immediately. Oh, thank you so much. The other things aren't so urgent, but... Now, I'll make a note of everything you want doing. Well, in the kitchen, I'd like some painting doing. All the kitchen walls? Just the area over the cooker. It's very greasy. Right, it does tend to get that way. Yes. Well, if you want a proper job done, what I'd need to do is strip the old paint and plaster it about a week before I paint it. Of course. Now, May tells me you also do work in the garden. That's right. Well, I'd like you to replace a fence. Just one? Yes, at the far end. Fine, shouldn't be a problem. And that's the lot. Fine. Yeah, as I say, I can come round tomorrow morning to look over things with you. Well, that's great, thank you. So, I look forward to seeing you tomorrow at... So, the answer was fence. So, in the That is first the line end only... of section 1. In the first line only, she said that one fence needs replacement. So, question में क्या था? सुनने में One प्रॉब्लम आ fence. जाती है। सुना तो ऐसे ही था, फेंस सुना मुझे, फेंस नहीं सुना कैसे। अच्छा, अगर आपको कई बार ना भी समझ आए ना, कई बार एक्सटेंट से समझ नहीं आता, पर आप फिर देख लो कि वो बात क्या कर रहे हैं। कि गार्डन में फेंस, अगर उन्होंने कुछ आपको टेंस या फेंस ऐसा लगा तो गार्डन में ऑब्वियसली फेंस की ही बात कर रहे होंगे। फेंस पर होता इसमें है है कि कैसे? फेंस का मतलब जो वो मतलब वो क्या कहते हैं, बाउंड्री करने के लिए जो वायर्स होती हैं, वो चाहे लोहे की वायर कह लो या आप जो मतलब बाउंड्री करने के लिए किसी भी बंद जगह को, जैसे गार्डन को बाउंड्री करने के लिए जो वायर्स लगाते हैं, दैट इज अ फेंसिंग, उसको फेंसिंग बोलते हैं। और अब आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते थे। तरुण ने बोला कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती थी, आप सी की जगह एस लिख सकते थे। सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी नया वर्ड सीखते हो या देखते हो, उसको स्पेलिंग्स लर्न कर लिया करो ताकि आप गलती ना करो जब कहीं भी आपको लिखना पड़े। चलो ठीक है, लेट्स डू दिस। Sir, I'm not able to play the video, sorry, audio. Could you please help? Just give me a moment, everyone. I'll just share my screen once again. Section 2. You will hear a recorded talk giving an introduction to the historical theme park Are you able of to hear? Manham Riverport in England. मैम Yes, ma'am. First, तो हो रही है, you but have some थोड़ी time zoom to कर look at दो screen। questions मैं 11 अभी स्लाइड to शो चला दूँ 15. एक मिनट। वो 11 to 15 है, मैं पहले 16 कर दूं, फिर मैं स्लाइड शो चला दूंगी। Port was already established. Process required to match installations with Now listen and answer questions 16 to 20. मैम ये फोन पे ही जूम हो जाती है। But what can you do and see on your visit today? Here are just a few highlights. We suggest you start with the visit to the copper mine. Travel on converted mining trains and journey into the depths of the mountain along seams once worked by hundreds of miners. Watch out especially for the great pumping machines which rid the mine of water. But please be warned that, like all mines, ours is very dark and closed in, and we do say that children under 5 and also dogs should not be taken into the mine. The next recommended visit is to the village school. While looking round the classrooms, take a special look at our display of games, which is one of the largest in the world. And it's recommended that you time your visit to coincide with a guided tour. This will give you the opportunity to ask lots of questions. Near the school,
is the beautiful old sailing ketch called the George. You're welcome to board the boat and look round the cabins. Look out for the ship's wheel, which was missing until only 5 years ago, when it was dredged out of the silt by a local fisherman. We have no idea how it got there, but it's been polished and proudly restored to its original place on the boat. Please take care going down the ladders if you wish to visit the lower deck. We don't recommend you allow young children to use them. So we hope you have a memorable visit to Manham Port, and we'll tell your friends all about us. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Check your answers, please. And let me know if you're not able to understand any question. मैं फर्स्ट 16 में मैंने एस नहीं लगाई थी. ठीक है, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है. 16 में मेरा Now गलत turn हो to गया. section 3. एक मिनट, मैं एक बार ऑडियो स्टॉप कर दूं. यस, सो 16 में क्या था? स्पेशली एडेप्टेड माइनर्स डैश टेक विजिटर्स इनटू द माउंटेन. तो अब ये ऑडियो में है कि वो ज्यादा ट्रेन्स की बात, वो ट्रेन है या ट्रेन्स है. और 16 आपने नहीं किया तो एक बार ऑडियो दोबारा सुन लेते हैं और देखते हैं कि 16 Section क्या 2. confusion थी. Questions 16. Ours is very dark. Journey into the depths of the mountain along seams once worked by hunters. 'with the visit to the copper mine. Travel on converted mining trains and journey into the depths of the mountain See, along seams once worked. दिस वाज इजी. अब उन्होंने बोला कि ट्रेवल थ्रू द ट्रेन और माउंटेन्स भी बोला, और इसमें क्या बोला? टेक विजिटर्स इनटू माउंटेन. और उसने क्लियरली ट्रेन्स बोला, ट्रेन नहीं बोला. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने ट्रेन लिखा, वहां पे ट्रेन्स था, वो आपको मार्क्स नहीं देंगे. तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ओके मैम. लेट्स डू नेक्स्ट. Section 3. You will hear two biology students called Emma and Jack discussing an experiment they are going to do together. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Yeah. And the proportion of 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Anyway, shall we have a look at the procedure for our experiment? We'll need to get going with it quite soon. Right. So the first thing we have to do is find our seeds. I think vegetable seeds would be best, and obviously they mustn't all be the same size. So how many sorts do we need? About 4 different ones? I think that would be enough. There'll be quite a large number of seeds for each one. Then for each seed we need to find out how much it weighs and also measure its dimensions, and we need to keep a careful record of all that. That'll be quite time-consuming. And we also need to decide how deep we're going to plant the seeds, right on the surface a few millimetres down or several centimetres. OK, so then we get planting. Do you think we can plant several seeds together in the same plant pot? No, I think we need a different one for each seed. Right. And we'll need to label them. We can use different coloured labels.
Then we wait for the seeds to germinate. I reckon that'll be about 3 weeks, depending on what the weather's like. Then we see if our plants have come up and write down how tall they've grown. Then all we have to do is look at our numbers and see if there's any relation between them. That's right. So then we get... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Ma'am, all correct. Okay, very good. बाकी सब Jaskaran, Priya. Now turn to section 4. ओके तो किसको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? जसकरण, प्रिया, कहाँ प्रॉब्लम थी आपको? बैक करना एक बार जहाँ पे ऑप्शंस थे। एक मिनट। मैम 26 and 30. Okay, 26 and 30. तो what I am observing is कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज यू मस्ट नॉट बी रेडी। शायद आप रेडी नहीं होगे वो समझने के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो व्हाट हैपेंस इसके सारे ही स्किप होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ऑडियो स्टार्ट होती है ना तो यू शुड हैव द क्वेश्चन इन योर माइंड कि सेलेक्ट सीड ऑफ डिफरेंट डैश एंड साइज। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा ठीक होना चाहिए क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। सो बी रेडी व्हेन यू नो दैट ऑडियो इज गोइंग टू प्ले। सो बी वेरी रेडी। और आपको ऑप्शंस भी माइंड में होने चाहिए एंड यू शुड रीड द क्वेश्चन ऑल्सो। Okay, let's try the next one. So we are done with the question. Different questions हमने देख लिए। एक फ्लो चार्ट था और complete the table था। अब हम एक complete practice test करते हैं and let's see जितना आज हो जाए we'll do that and rest of the test we can do in the next session. So we'll try to do I think 15 minutes है तो 15 questions तो हो जाएंगे। Okay, let's begin. IELTS 15. Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2020. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber.
You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now. 497 East Side. OK, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky... Jameson. Jameson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV, and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems, it's communication that really matters, so you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. OK, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, $11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. OK. I wouldn't get stressed about the interview, though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones, and they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've covered everything. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1.
Part 2. You will hear a woman giving a presentation about a holiday on an island in Britain that her company organises. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning. My name's Erica Matthews, and I'm the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years' experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we've got to know extremely well. I'll start with our 6-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north, and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you, then you'll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners, and lunch on the 3 days when there are organised trips. Day 4 is free, and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I've mentioned. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible, so unlike with many companies, the price is the same whether you book 6 months in advance or at the last minute, and there's no supplement for single rooms in hotels. If you make a booking then need to change the start date, for example because of illness, you're welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Okay, so we are done with the first section today. आज first 14 कर लिए हमने, so इससे आगे हम next listening में करेंगे. So MCQs, were you able to do the MCQs? Problem आई इस बार MCQs में? बेटर थे आगे ना, मतलब पहले से सही. ठीक है, जसकरण जशन MCQs हो गए आपसे? प्रॉब्लम आई कोई? नो मैम. हाँ जी जसकरण, आपसे हो गए? चलो ठीक है, जब हम आंसर्स चेक करेंगे तो विल सी एंड कीप योर आंसर्स इन अ सेफ प्लेस, ताकि जब आप एंड में आंसर्स मैच करो तो यू कैन सी कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं. ओके, तो टुमारो वी डोंट हैव एनी सेशन ऑन अकाउंट ऑफ लोडी, तो celebrate well, celebrate with your family and be safe and don't go outside first of all, that is very important. Or on Friday we are having a session and then after we'll have the session on Monday. So any problem, any question do you want to ask before we leave? हाँ जी मैम, MCQ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ. MCQ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਉਹ ਤੰਨੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਚ ਹੁਣ ਫਸਟ MCQ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ बोल जाना केरा. MCQs में बोल रहे हो आप? हाँ जी. हाँ, तो MCQs में ऐसा है कि आपको जब वो बोल रहे हैं ना, पहले जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहे हैं, और समझना, अच्छे से समझना कि क्वेश्चन पूछा क्या है. और जब उन्होंने ऑडियो चलाई
और ऑडियो को भी समझना है। और ऑप्शन, वो सारे ऑप्शंस के बारे में बात तो जरूर करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट टू कंफ्यूज यू, वो हाँ हर जी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। और जब ठीक उन्होंने है जी आप बात की हर ऑप्शन के बारे में, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब वो किसी ऑप्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, किसी ऑप्शन के बारे में कुछ बोलेंगे, या कुछ भी बोल सकते हैं, पर आपको ये जी देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है ऑडियो में। ठीक तो ये मैच करना है ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ। जब ये मैच हो जाएगा तो वो ही ऑप्शन ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्ड सुन लिया ऑडियो में और सोचा कि वही ठीक है। बात तो वो सबकी करेंगे, आपको कंफ्यूज, एमसीक्यू का काम है जस्ट टू कंफ्यूज यू। ठीक तो है आपको ऑप्शन को मैच करना है। तो हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी अगर आपका कोई गलत होगा। पर अभी ठीक के है लिए बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यू हैव टू मैच द ऑप्शन विद द क्वेश्चन। और वो कैसे होगा, जब आप समझोगे वो बोल क्या रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना समझ आता है उतना समझने की कोशिश करो। ठीक है Okay, so I'm again reminding tomorrow we don't have a session, so everybody please join on Friday. और Friday का थोड़ा timing में change है, and on Friday the session is at 5 p.m. instead of 6 p.m. So okay, so we'll all meet on Friday. Happy Lodi everybody, and okay, bye Lodi everyone. Good evening. Thank you.